Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 3. The name of the paper is Phonetics and Phonology, and today we'll discuss a few terms like flaps, glides, approximants, central versus lateral, and trills. This lecture is for the students of BS 4th semester GDC PABI, but it is also for those students whose colleges are affiliated with Abdul Wali Khan University, Mardan. There are some of the terms which I wanted you to learn separately because they are important. The first two are already known to you, flaps and taps, and we have discussed it in your book. Therefore, there is no need for the discussion of flaps or taps. I'll just go through it briefly. For example, if the word butter is pronounced as butter or little is pronounced as little, it is then expressed with this symbol. This is this or capital D, as we have discussed. The same is the case with latter, which is pronounced as ladder, metal, which is pronounced as metal, and writer, which is pronounced as rider. These are referred to as flaps or taps. As the tip of the tongue taps the alveolar ridge again and again, therefore they are called either taps or flaps. So this is quite easy for you. We also discussed in UOL glides and approximants, and we discussed two of them, W and Y sound, and we said that both of these are such sounds in the production of which your tongue glides, and therefore these are called glides. UOL also said in his book that these sounds, as we have in we and wet, or in yes and you, combined with these flaps together, all of them are referred to as approximants. These two are also semi-vowels. These glides can also be referred to as approximants. Coming to the point of approximants again, as the upper discussion was done by UOL, this discussion was done by Carl Philipp in his book English Phonetics and Phonology. It is a little detailed, and you can learn little in, though it is not easy, but of course you will get a little more knowledge if you learn this one. Carl Philipp tells us that in the case of approximants, there is least degree of constriction when we deliver the approximants. The articulators come very close to each other, but they are not so close as to create friction. For example, when you deliver s sound, you can hear the friction. But in the case of approximants, the articulators, though they come very close to each other, the degree of constriction is the least degree, but even then friction is not produced. When this kind of stricture comes between the two articulators, but friction is not produced, this is called open approximation. And when consonants are produced with the help of open approximation, these consonants are then referred to as approximants. So now we discuss these approximants. The first one is Y sound, the next one is R sound, and the third one is W sound. So let us see how the discussion goes on. Carr tells us that the first sound in yes, that is Y sound, it is produced
when front of the tongue become closer to the hard palate, and as a result, yes, if we deliver yes sound, if we say yes sound, it is produced by bringing the front of the tongue close to the hard palate. You know the hard palate from this diagram. This is the hard palate. So the tongue is brought here to the hard palate. The front of the tongue, though it doesn't create friction, but the sides of the tongue, they touches the gum, and there is a closure, and that closure is a complete closure. But the air escapes along the central groove, in which the front of the tongue is not close enough to the hard palate to create friction. So the air rushes along the central groove. This is the central groove, not the sides, the central. The sides are in closed approximation, and the tongue touches the gums. There is a complete closure. However, along the central groove there is a slit left, and through this slit the sound or the air rushes. This sound is written or transcribed as this is a symbol for it, and it is referred to as voiced palatal approximant. It is voiced because the vocal cords vibrate while we pronounce the sound y, and it is palatal because the tongue touches the palate, the hard palate, and it is approximant because there is an open approximation between the tongue and the hard palate. Approximants, as we said, are normally voiced because the vocal cords vibrate. So this was a y sound, which is referred to as approximant. This is also these are the words ripe, rope, rat, and this is the sound for the first sound of these words. This is that symbol for it. Let me click this symbol for you, and you will find out what is the pronunciation of this sound. You can see there are 3 R sounds. The first one is this one. The tip of the tongue, if you look at this diagram, the tip of the tongue goes towards the palate, but it doesn't touch the palate. It is almost in touch, but not in touch, and there is an area left open so that the air can pass through that area, and there is an open approximation there. As there is an open approximation there, this sound is referred to as an approximant. The sound is found in ripe, rope, and rat. This sound is quite different from these 2 other sounds. This is the sound, and you can see the difference from these sounds. Yes, so this is it. These are the 3 sounds. This sound is referred to as an approximant because the tongue comes into a constriction of open approximation with alveolar ridge. If you look at this diagram, this is the alveolar ridge, and this is the tongue. The tongue is raised, but there is a slit left open, and it is referred to as open approximation. As the tongue is raised to the alveolar ridge, this is referred to as alveolar approximant. So it is an alveolar approximant. In pronouncing
the alveolar approximant, just like y sound, the constriction of complete closure is with the gums at the sides of the mouth, but the air again escapes along the central groove without creating friction. So friction again is not created, and the air passes through the central groove, again not to the central is contrasted with lateral. As this sound is created while tongue is touched with this part, which is after the alveolar ridge, therefore it is called post alveolar approximant. So this was that second approximant we discussed. The first one was ya, the second one was ah. Now you can see that when you pronounce ah, don't touch the tip of the tongue with the alveolar ridge or the post alveolar ridge area. Just keep an open approximation there, and you create this sound ah. The third is wa sound. Wa sound is a little tricky, because just like the other approximants, ya and r approximant, there is again a constriction, an open approximation, and this open approximation is made with the help of the lips. However, no friction is created. When there is open approximation and there is no friction, the sound is then referred to as approximant. But when we pronounce wa sound, though there is this open approximation, but there is another movement. Back of the tongue and the velum also almost touch each other, and there is emotion in them. So we say that there is a velar articulation as well. Again, if you look at this diagram, this is velum. While pronounces wa sound, as there is a glide, there is a movement here too between these two articulators, velum and back of the tongue. So therefore, this sound, wa sound, is called voiced, as all the approximants are voiced, as lips are involved, so they are labial. But as velum is involved here, it is also referred to as velar approximant. So wa is a voiced labial velar approximant, and it is transcribed with this symbol. So if you repeat these approximants, the first thing was that it is articulated with open approximation, which means the two articulators come very close to each other. However, friction is not produced as is produced in fricatives. That is not produced. Then we discussed the example of ya sound, which is an approximant, and it is delivered or produced with the help of the front part of the tongue close to the hard palate. The air, this is important, escapes along the central groove. Central, as I said, is contrasted with lateral. Ya sound therefore is described as palatal voiced. All of them are voiced, palatal approximant. R sound is again an approximant, because a constriction of open approximation is created with the alveolar ridge, tongue and the alveolar ridge. There is no friction produced, therefore this is an alveolar approximant. As the area which is after the alveolar ridge, this area is called post alveolar ridge, therefore it is called as post alveolar approximant. Wa sound, as we have in wet, is again an approximant,
and the open approximation is created with the help of lips. However, there is another movement in the back of the tongue and the velum between these two, and as a result, wa approximant is referred to as voiced because all of them are voiced, labial because lips are involved, and velar because velum is involved. So this is a little detailed discussion of the approximants by Carl Philipp, and you can learn it from Yole or from here. I wanted you to know both of them. 3 approximants have been discussed here. Ya represented with this symbol, A represented with this symbol, and Wa represented with this symbol. So this was all about the approximants. इसको अब थोड़ा सा आप उर्दू में भी सुन लें ताकि आपको तसल्ली हो. हमने शुरू में ये कहा कि ये कुछ टर्म्स हैं कि मैं चाहता था आप अलग से कर लें, बाज़ मुश्किल हैं. फ्लैप्स और टैप्स तो आप कर चुके हैं, ये आसान है. बटर को अगर ठ को ड के साथ या र के साथ पढ़ा जाए तो इसको फ्लैप या टैप कहते हैं. टैप कहते हैं बार बार लगने को. चूँकि ज़बान बार बार लगती है आपके एल्वियोलर रिज के साथ, तो इस वजह से ये टैप या फ्लैप कहलाता है. और जैसे एग्जांपल है लिटल को लिरल पढ़ना जो कि र की तरह है, तो इसको इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं. और बटर को बरर पढ़ना तो इसको कैपिटल डी के साथ भी ज़ाहिर कर सकते हैं, या इस डी के साथ भी, ठ या ड के साथ भी इसको ज़ाहिर कर सकते हैं. कैपिटल डी ख़ास तौर पर यहाँ पे ये बताया गया है कि ठ को ड के साथ पढ़ा गया है, जैसे लेटर को लैडर, मेटल को मैरल और राइटर को राइडर. तो अगरचे ये फिर अगर ये अगर स्पेलिंग आप ले लें तो ये तो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन इनको बाज़ औक़ात यूँ पढ़ते हैं. इसमें हम प्लेटो की एग्जांपल भी ली थी, और उसको प्लेटो पढ़ के जो गलती होगी वो मिस इंटरप्रेटेड फ्लैप कहलाएगा. ये आप पिछले लेक्चर्स में जो सेकंड सेमेस्टर के लिए उसमें आप समझ सकते हैं. यही बात ग्लाइड्स की भी है, और ग्लाइड्स को योल ने अप्रॉक्सिमेंट्स भी कहा है, जिसमें वो और ये शामिल है. और ये अप्रॉक्सिमेंट्स की डिस्कशन में नीचे भी आया है जो कार्ल फिलिप ने आपकी किताब इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में की है. ये एक रिकमेंडेड बुक है, और उस से आप इसको देखें कि कार्ल फिलिप क्या कहता है. तो इसमें हमने ये पढ़ा कि जब 2 आर्टिकुलेटर्स बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन इतने करीब नहीं होते कि फ्रिक्शन पैदा हो जाए. फ्रिक्शन जैसे हम फ्रिकेटिव्स में फ्रिक्शन पैदा होता है, जैसे स या ये फ्रिक्शन है. लेकिन ये जब बहुत करीब आते हैं तो ये इतने करीब नहीं होते कि फ्रिक्शन पैदा करें, और जब इतने करीब नहीं होते कि फ्रिक्शन पैदा करें तो इसको कहते हैं ओपन अप्रॉक्सीमेशन. तो अब जब आवाज़ पैदा होगी ये अप्रॉक्सीमेंट कहलाएगा. इसमें 3 मिसालें हमने की. यस साउंड जैसे यस के शुरू में है, ये अप्रॉक्सीमेंट है, क्योंकि इसमें फ्रंट ऑफ द टंग जो है ये हार्ट पैलेट के करीब आ जाता है. इस डायग्राम को देखें, फ्रंट ऑफ द टंग और ये हार्ट पैलेट है, ये दोनों करीब आ जाते हैं, और ये ओपन अप्रॉक्सीमेशन बनाते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेंट के लिए ज़रूरी है. ये बात बड़ी अहम है जो कि अगले टॉपिक में भी होगी, कि जो एयर निकलती है यस साउंड को क्रिएट करते वक्त, अगर आप इस डायग्राम को देखें, आप ऊपर ये टांग ले जाते हैं, लेकिन जो एयर रश करती है वो ऐसे जाती है, ये इस तरह जाती है. ये लेटरल है, ये साइड और ये साइड, ये लेटरल है. ये साइड
اور وہ سائڈ لیٹرل بند ہوتے ہیں، جبکہ جو ایئر ہے وہ سیدھی ایسے نکلتی ہے. تو یہ ایسے سیدھی جب نکلتی ہے تو ہم اس کے کہتے ہیں along a central groove. تو یہ سینٹر میں سے جاتی ہے اور سارے اپروکسیمنٹس وائسٹ ہوتے ہیں. یہ اپروکسیمنٹ چونکہ پیلٹ یا تالو کے ساتھ زبان کلوز ہوتی ہے تو یہ پیلیٹل، وائسٹ پیلیٹل کہلاتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ یہ سمبل ہے، بہت پیچیدہ ہے یہ سمبل. میں نے آپ کو کلک کرایا انگلش میں کرتے وقت بھی، اور وہ یہ تھا کہ ایک یہ ساؤنڈ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں ٹنگ اوپر جاتی ہے، ٹچ نہیں کرتی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ را ہے لیکن را نہیں ہے، کیونکہ را یہ ہے. اور اس میں جو بار بار ٹکرانا ہے وہ جلدی یعنی کم ٹکراتا ہے، اس میں زیادہ ٹکراتا ہے، اس میں نہیں ٹکراتا. زبان تھوڑی سی مڑ جاتی ہے پیچھے کی طرف، لیکن اوپن اپروکسیمیشن بناتی ہے. اس وجہ سے اس کو اپروکسیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. آپ رائپ میں، روپ میں، ریٹ میں، چونکہ یہ جب ہم اس کو رائپ اور روپ اور ریٹ پڑھتے ہیں جو کہ صحیح تلفظ نہیں ہے، پھر بھی چونکہ اس کے معنی میں فرق نہیں آتا تو اس کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے. ادروائز یہ ایک اپروکسیمنٹ ہے، اور یہ چونکہ ایلویولر رج، یہ ایلویولر رج ہے آپ کا، اس کے تھوڑا سا بعد یہ ٹچ زبان اوپر جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو پوسٹ ایلویولر اپروکسیمنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اس میں فریکشن پروڈیوس نہیں ہونی. تو یہ دوسرا ہوا. تیسرا ہم نے وہ اپروکسیمنٹ پڑھا جس میں اپروکسیمیشن دو ہونٹوں کو ملا کے بنتی ہے، فریکشن پروڈیوس نہیں ہوگا. لیکن اس میں پیچیدہ بات یہ ہے کہ اس میں زبان کی موومنٹ ویلم کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور آپ کو بتایا تھا یہ ویلم ہے، یہ بیک آف دا ٹنگ ہے، تو اس میں یہ موومنٹ بھی ہے. لہٰذا اس کی ڈسکرپشن کے لیے ہم ایک تو یہ سارے وائسٹ ہیں، تو یہ وائسٹ، چونکہ یہ ہونٹوں کے ذریعے بنتا ہے وہ، تو یہ لیبیل، اور چونکہ یہ ویلم بھی انوالو ہوتا ہے تو یہ ویلر اپروکسیمنٹ ہے. تو یہ اس میں اہم بات ہوئی. Now let us come to the terms of central and lateral. When we were discussing these approximants, especially this alveolar approximant, y and r, this approximant and this approximant, we said that the air escapes along a central groove, and I showed this to you in this figure. This is the central groove. These are the lateral grooves. So when these approximants are delivered, when these approximants are said, there is the air which escapes along the central groove. This is referred to as central. This is not the case with this sound, which is O sound. If you create this sound, O sound, as you have in the word lift, the air doesn't pass through the central area, and it passes through the lateral sides. In pronouncing O sound, the tip of the tongue touches the ridge, closing it, but the sides remain open. So therefore, this approximant is a lateral approximant, or is an approximant, as we said. O is also an approximant. R is voiced. O is voiced. Where then lies the difference? Both of them are also alveolar, because the alveolar ridge is involved to some degree. Therefore, both of them are also alveolar.
both of them are voiced. Where lies the difference then? The difference is that in the case of R, the air passes straight from this area, while in the case of L, this area is closed with the tip of the tongue and alveolar ridge, and the sides remain open. The air passes from there. So O, therefore, is not central, it is lateral, while R is a central one. So one is lateral O sound, and this one is central. R sound is central. और ये थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. दो टर्म्स हैं. सेंट्रल का तो आपको यहाँ से समझ आ गई है जो हमने पढ़ा. जब हम यह साउंड क्रिएट करते हैं तो साइड्स अगर से बंद होते हैं, लेकिन जो एयर है वो पास होती है सीधा रास्ते से. तो ये सेंट्रल ग्रू से पास होती है एयर, तो इस वजह से ये सेंट्रल अप्रॉक्सीमेंट कहलाएगा. आर बी सेंट्रल अप्रॉक्सीमेंट है, क्योंकि एयर जो है ये सेंट्रल ग्रू से पास करती है. लेकिन ये मामला ओ साउंड के केस में नहीं है. और जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो आपका ये हिस्सा तो बंद हो जाता है, तो ये साइड से, जिसको लेटरल साइड्स कहते हैं, इससे एयर रश करती है, और इसी वजह से ओ जो है ये लेटरल अप्रॉक्सीमेंट कहलाता है. दोनों अप्रॉक्सीमेट है. मैं थोड़ा सा इसको रीड कर देता हूँ ट्रांसलेशन के साथ. इन डिस्कसिंग द एल्वियोलर अप्रॉक्सीमेंट आर, ये जो ऊपर हुआ, we said that the air escapes along a central groove of the tongue. In this case, central groove of the tongue, ज़बान का जो सेंट्रल रास्ता है, इससे the same kind of groove can be formed by the lips. ओ जब वो हम बोलते हैं तो ये भी सेंट्रल ग्रूव है. However, it is possible to produce fricatives and approximants in which this is not the case. तो फ्रिकेटिव्स भी ऐसे बन सकते हैं, अप्रॉक्सीमेंट्स भी ऐसे बनते हैं, लेकिन उसमें चूंकि फ्रिक्शन पैदा होती है तो ये इस वजह से डिफरेंट होगा. लिफ्ट की एग्जांपल है. फॉर इंस्टेंस, इन द फर्स्ट साउंड इन लिफ्ट, विच इज़ ओ साउंड, द सेंटर ऑफ द ब्लेड ऑफ द टंग forms a structure of complete closure with part of the alveolar ridge. जो टिप ऑफ द टंग है ये कम्प्लीटली एल्वियोलर रिज के साथ टच करता है और ये कंप्लीट क्लोज करता है, जबकि but the articulation which counts is that between the sides of the tongue and the alveolar ridge. लेकिन sides of the tongue और alveolar ridge जो है यहाँ पे ये खुले रहते हैं. ये articulation important है यहाँ पर. Since the sides of the tongue form a constriction of open articulation with the alveolar ridge, sides open होते हैं and no friction is created, we refer to this sound as voiced alveolar lateral approximants. सारे approximants voiced हैं, लेकिन ये तो ये भी voiced है. ये एल्वियोलर है क्योंकि एल्वियोलर रिज इन्वॉल्व है, लेकिन ये सेंट्रल नहीं है, लेटरल है, क्योंकि ये लेटरल साइड से एयर पास करती है ज़बान की, तो ये इस वजह से लेटरल कहलाएगा. एज ए वॉइस्ड एल्वियोलर लेटरल अप्रॉक्सीमेंट्स. सिंस इंग्लिश फ्रिकेटिव्स और अप्रॉक्सीमेंट्स आर टिपिकली सेंट्रल, फ्रिकेटिव्स भी सेंट्रल होते हैं. मसलन जब आप बोलते हैं तो आवाज़ सीधी निकलती है, जब आप बोलते हैं तो आवाज़ सीधी लाइन में ही निकलती है, लेटरल नहीं है. तो फ्रिकेटिव्स और अप्रॉक्सीमेंट्स ये ख़ास तौर टिपिकली सेंट्रल होते हैं. वी विल यूज़ द टर्म लेटरल फॉर लेटरल्स. तो एक दुक्का जो लेटरल है उनके लिए हम लेटरल के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे. द साउंड्स अ एंड आर clearly quite similar. Both are approximants, both are voiced, both are alveolar. The principal difference is that the former, पहले वाला,
یعنی او جو ہے از لیٹرل اینڈ دا لیٹر اور آ جو ہے یہ سینٹرل ہے. تو یہ ان دونوں میں فرق ہوا. If you look at these three sounds, I have been referring to them over and over again. This is also R sound, but it is one type. And this is referred to as approximant, as we have discussed. This one is referred to as a tap or flap, as we have discussed, because the tongue taps the alveolar ridge again and again. Sometimes the speakers neither create this sound nor this sound. They instead create this one, and this sound is referred to as a trill. So this is the difference between these three sounds. This one is approximant, and it is produced in open approximation. I've explained open approximation to you. This one is a tap or a flap, but there is another one. This is called trill. You can see the difference. If you listen to them closely, you find out that trill is quite different. So it is neither this sound nor this sound. In the case of trills, neither is this sound created nor is this sound created, but another type of sound is created, which is voiced, alveolar, but it is trill. How do we produce a trill? What is the manner of articulation? The manner of articulation of the trills is such that we hold one articulator, in this case blade of the tongue, next to the other, in this case the alveolar ridge. There is then a complete closure, but as there is a pressure behind it, this closure is opened for a little time. That muscular pressure is released, and as a result the air passes through the central groove. This constriction is not like the constriction of the stops. In the stops, it is completely blocked. There is no release of that. It is released, but it is in the case of stops, the release is quite sudden, while in this case that muscular pressure is decreased because of the pressure of that air, and for a little while the slit opens, the air goes through, and the tongue again touches the palate, and it is touched again and again with the alveolar ridge, and as a result trills are created. Trills, for example, as I said, this one, I'm sorry, there, look at this one, this one was approximant and the other was tap, but this one is trill. You can feel that the tongue touches the upper part, that is the alveolar ridge, and then it comes down due to the pressure of the air, and then again touches it. These sounds are created and they are referred to as trills. اس کو اردو میں سنیں. اس کو یہ جو آر ساؤنڈ ہے یہ پیچیدہ ہے چونکہ 3 آر ہیں. ڈفرنس آپ کو اس آئی پی اے چارٹ ہی سے ملے گا. یہ جو ساؤنڈ ہے یہ اپروکسیمنٹ ہے, یہ فلیپ ہے, اور یہ ٹرل ہے. تو یہ آپ کو سنائی جب دے تو آپ کو آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں فرق ہے. ٹرلز جب ہم کریٹ کرتے ہیں تو یہ جو جگہ ہے زبان اوپر یہاں پہ
ٹچ کرتی ہے لیکن اس کے بعد پریشر پیچھے سے زیادہ ہوتا ہے ایئر کا اور یہ تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے اور پریشر کم ہوتا ہے تو یہ اوپر جاتی ہے اور یہ بہت بار بار یہ ٹکراؤ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ سنیں تو آپ کو اس ٹکراؤ کی سمجھ آئے گی. بار بار زبان ٹکراتی ہے اور اس سے یہ جو ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے یہ ٹرل کہلاتا ہے. میں ریڈ کر لیتا ہوں آپ کے لیے. اسپیکرز آف سرٹن ایکسنٹس آف انگلش ایکسنٹس، بعض انگلش ایکسنٹس کے لوگ اٹر neither R nor R in words such as rat, rope, reap, true اور creep میں جو الفاظ ہیں اس کو نہ یہ پڑھتے ہیں اور نہ یہ پڑھتے ہیں. But a sound referred to as voiced alveolar trill. جو ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے وہ alveolar trill کراتا ہے. Trills are produced by holding one articulator. ٹرل پیدا ایسے ہوتا ہے، بناتے ایسے ہیں کہ ایک آرٹیکولیٹر کو ہم لگاتے ہیں. یہاں پہ آرٹیکولیٹر بلیڈ آف دا ٹنگ ہے، نیکسٹ ٹو دی ادر دوسرے آرٹیکولیٹر کے ساتھ یہاں پہ الویولر رج ہے. ان اے کنسٹرکشن آف کمپلیٹ کلوزر، یہ جو کنسٹرکشن بنتا ہے یہ مکمل کلوز ہو جاتا ہے لیکن سٹاپ کی طرح نہیں. بٹ وداؤٹ دا سیم مسکولر پریشر ایز ون فائنڈز ان سٹاپس. سٹاپس میں مسکولر پریشر زیادہ ہوتا ہے، جیسے پھا میں ہے، جیسے با میں ہے. دا ریزلٹ از دیٹ ایئر پریشر بلڈز اپ بیہائنڈ دا کلوزر. تو یہ جو کلوز جگہ اس کے پیچھے ہوا کا دباؤ بنتا ہے اینڈ فورسز اٹ اوپن، اور ہوا کا دباؤ اس کو کھولتا ہے. دی ایئر پریشر دین ریڈیوسز، پھر ایئر پریشر کم ہوتا ہے. دا مسکولر پریشر اگین کریٹس اے کنسٹرکشن، پھر مسکولر پریشر سے کنسٹرکشن پیدا ہوتا ہے کمپلیٹ کلوزر کا. یہ بار بار دس سیکوینس میں بھی ریپیٹیڈ ان کوئک سکسیشن، بار بار یہ ایک کے بعد دیگرے پیدا ہوتا ہے. پروڈیوسنگ ان دا کیس آف این alveolar trill a series of taps of the tongue against the alveolar ridge. لگاتار ٹیپس آف دا ٹنگ alveolar ridge کے خلاف لگتے ہیں. The alveolar trill is transcribed as this but is relatively rare. یہ عام طور پہ کم ہوتا ہے. ہمارے اردو اسپیکرز اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں اور بعض یوز نہیں بھی کرتے. The last term is the secondary articulation. When we pronounce this sound, which is a lateral sound. Lateral means lateral approximant. That when we pronounce O, the tip of the tongue, look at this diagram, the tip of the tongue touches the alveolar ridge. This is completely blocked, and from the sides the air rushes, and these sides are referred to as lateral. So from the lateral parts the air rushes, therefore the O sound is referred to as lateral alveolar. But when you pronounce this sound O, there is also a movement, a secondary movement, in which the back of the tongue is involved. This area and this area is also involved in it. For example, when you say O, and if you carefully pronounce it, there is the rise of the back of the tongue towards the velum. So there are two movements now. One movement, the tip of the tongue touches here, O, this is one movement, and this is the basic movement. Therefore O is pronounced as alveolar. But as the air doesn't pass straight away, rather it passes through the lateral sides, through the lateral areas, this is referred to as lateral approximant, O. But if you pronounce it, you will judge that there is also a rise in this area, back of the tongue. As you pronounce it in principle, or in this O sound, back of the tongue is raised to the velum. This is the secondary movement. Though the primary movement is this one, as O is described as alveolar lateral approximant,
This is the secondary movement. So the secondary articulation is actually velarized. Velarized means that it is raised to the velum. This second type of reading of a sound, for example, you can say principal, but you can say principal. A sound. In a sound, back of the tongue is involved. Symbol for it is this one, and it is referred to as dark L. It is a term used in phonetics for it. It is called dark L. इसको उर्दू में भी सुन लें. ये सेकेंडरी आर्टिकुलेशन में एक लफ्ज़ जब हम बोलते हैं, मसलन अगर हम अ बोलें तो टिप ऑफ द टंग ऊपर रेज होता है, एल्वियोलर रिज की तरफ बंद होता है और साइडों से हवा निकलती है, तो हम इसको लेटरल अप्रॉक्सीमेंट का नाम देते हैं, और एल्वियोलर तो ये है ही. लेकिन इसके साथ साथ कुछ बैकवर्ड मूवमेंट होती है. बैक ऑफ द टंग भी वेलर की तरफ राइज होता है, वेलम की तरफ, और यूं एक दूसरी मूवमेंट होती है. ये सेकेंडरी आर्टिकुलेशन कहलाता है. तो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको. द लेटरल अप्रॉक्सीमेंट अ इज एल्वियोलर. ये तो एल्वियोलर है. However, laterals may also be produced with additional articulation. एक इजाफी आर्टिकुलेशन भी इसमें आ सकती है, such as one formed between the back of the tongue and the velum. और ये आर्टिकुलेशन बैक ऑफ द टंग, ये वाला एरिया, और वेलम, ये वाला एरिया, इनके दरमियान हो सकती है. दैट इज़ ए वेलर आर्टिकुलेशन. तो ये इसका नाम होगा. When this happens, जब ये हो, we may distinguish between the alveolar articulation. तो एक तो alveolar articulation हो गया, इसको हम कहेंगे as the primary articulation. ये तो primary है, बुनियादी है. And the velar one as the secondary articulation. और जो velar के साथ है, velum के साथ है, वो secondary. Where a secondary articulation is velar, जब यूं हो कि secondary articulation velar हो, velum के साथ हो, this process is referred to as velarization. तो हम कहते हैं velarization का process हो गया है. We say that the lateral is velarized. और हम कहते हैं जो lateral था वो velarized हो गया. A velarized lateral approximant is transcribed using a velarization diacritic. Diacritic निशान को कहते हैं. आप देख सकते हैं अ के साथ ये जो निशान बना हुआ है, ये डायक्रिटिक कहलाता है. दिस साउंड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज डार्क एल, और इसको डार्क एल कहते हैं. अब ये अगर आप देखें, इसको अगर हम लेक्चर को रिपीट करें सारा, तो ये चंद मैं चाहता था कि आपको समझ आए. फ्लैप्स और टैप्स, चूँकि ज़बान बार बार टकराती है तालु के साथ, तो इसको टैप्स और फ्लैप्स कहते हैं. जैसे बडर को आप बडर पढ़ें या लिटल को आप लिटल पढ़ें, और ये और अल्फाज भी हैं. यूँ ग्लाइड्स हैं, व और या, इसमें ज़बान ग्लाइड करती है, इनको ग्लाइड कहते हैं. अप्रॉक्सीमेंट की डिस्कशन कार फिलिप्स से हमने डिटेल में की. हमने यस साउंड का जिक्र किया जिसका सिंबल ये है. हमने आ का जिक्र किया जिसका सिंबल ये है. हमने व का सिंबल जिक्र किया जिसका सिंबल ये है. हमने सेंट्रल और लेटरल की बात की, और ये एयर पैसेज की बात है. जब सीधी हवा सांस गुज़रती है तो ये सेंट्रल कहलाता है. जब साइड से गुज़रती है तो ये लेटरल कहलाता है. जब हम आर बोलते हैं तो सामने से गुज़रती है, ये सेंट्रल है. और जब हम अल बोलते हैं तो सामने की जगह रुक जाती है, बंद हो जाती है, और साइडों से निकलती है, तो ये फिर लेटरल कहलाएगा. ट्रिल्स की हमने बात की, और हमने ख़ास तौर पे इन 3 र साउंड्स की बात की कि ये वाला जो साउंड है ये अप्रॉक्सीमेंट है, ये वाला साउंड फ्लैप या टैप है, और ये साउंड ट्रिल है. तो इसकी ख़ुद भी आप प्रैक्टिस करें. सेकेंडरी आर्टिकुलेशन में हमने ये कहा कि जब हम अ प्रोड्यूस करते हैं तो एक आर्टिकुलेशन तो ये है कि ज़बान का सिरा ये एल्वियोलर रिज के साथ
اس ڈائیگرام کو دیکھیں ایلویئر رج کے ساتھ ٹکراتا ہے، لیکن اس کا ایک تلفظ یہ بھی ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں پرنسپل، یا آپ کہہ سکتے ہیں پرنسپل او ساؤنڈ، تو ایک ہے ایک ہے او، اس میں یہ حصہ اوپر جاتا ہے، تو یہ پرائمری آرٹیکولیشن کہلائے گا اور یہ سیکنڈری آرٹیکولیشن کہلائے گا. So that was all about these terms, phonetic terms. Assalamu alaikum and good luck.